Chapter number 18, Syphilitic Mentals. सर ने थोड़ा रिकैप यहाँ पे दिया है कि व्हाट इज सिपिलिस। सिपिलिस में क्या होता है? सो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म वांट टू सर्वाइव। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म वांट टू सर्वाइव। The first two functions of a cell are involved in energy production for self-survival, that is sora. Then multiplication for species survival is psychosis. And the third is defense, that is the function is for protection of self and species is syphilis. खुद को भी सर्वाइव करना है, खुद के पेसिस को भी सर्वाइव करना है, खुद का भी प्रोटेक्शन करना है और पेसिस का भी प्रोटेक्शन करना है. दैट इज द करो या मरो on the basis of defense is syphilis. So when the first function is affected or sacrificed to defend against a hostile stimulus, we get physiologic defense or soric disease or sora. When the first defense is not sufficient, the cell may undergo changes at the genetic level to defend itself morphologically by construction, accumulation, or fortification, which we equated to psychotic defense or psychosis. Yes. तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था तीनों भी माइजम, सोरा, साइकोसिस एंड सिपिलिस, इसके डेफिनेशंस क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है, क्या पैथोलॉजी होती है. व्हाट इज सोरा? सोरा इज दैट इज द ओनली फंक्शन, फिजियोलॉजी मेंटेन रखना, दैट इज सोरा. जहां फिजियोलॉजी मेंटेन नहीं होती, फिजियोलॉजी बिकम फेल, आफ्टरवर्ड पैथोलॉजी स्टार्ट. पैथोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन, दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिफेंस विल स्टार्ट इज psychosis. When construction become fail, constructive defense become fail, then there will be start the destruction, that is the syphilis. So when the first defense of physiological response is not sufficient, the cell may undergo changes at the genetic level to defend or save the whole organism by destroying a part of it. This is at the cost of third function of immunity. This can be equated to syphilitic defense or syphilis. This can also be precipitate after constructive defense has been found insufficient to stop the hostile attack. Hence, after psychosis, we can get syphilis. So, after sora, psychosis will start. After psychosis, syphilis will start. But इन सम केसेस साइकोसिस बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए आएगा एंड डायरेक्टली सोरा टू सिफिलिस हो जाएगा. सो सोरो टू सिफिलिस आल्सो, एंड आफ्टरवर्ड साइकोसिस कम. सो कंस्ट्रक्शन इट कुड बी द रिवर्स. Destructive pathology after having got rid of part to save the whole may switch on genetic apparatus to produce construction for psychosis. Yes. तो ये होता है कॉम्पेंसेटरी क्योर में कि सिपिलिस चलेगा, सिपिलिस जाके मतलब डेंजर ऑफ लाइफ जाके वहां कुछ कंस्ट्रक्टिव आ गया, दैट इज द कॉम्पेंसेटरी क्योर. So thus diseases can progress in different constitution in different manner. So sora to psychosis, sora to syphilis, sora to psychosis then syphilis, and sora to syphilis then psychosis. So the fourth type है that is the compensatory cure. तो इस टाइप से प्रोग्रेशन ऑफ माइजम होगा, प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज होगा अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजी, और उस बेस पे माइजम डिसाइड होगा. नाउ द सिफिलिस. When a hostile stimulus trying to bring about impairment in homeostasis of the organism cannot be controlled and overpowered by the physiological defense or even
constructive defense, the injured organism adopts a different strategy. It has to save the whole organism and prolong life by hook or by crook. Yes, by crook is the crooked way is the option now left for it. In this crooked way, it tries to sacrifice the part under attack, that is necrosis, gangrene, etc. The part under attack, if diseased, may itself pose a problem for the equilibrium or homeostasis or health of the whole organism. The organism hence sacrifices that part in order that the organism as a whole survive. इस sacrification ये किस लिए होता है? तो only to survive the whole man. जान मतलब लाइफ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. लाइफ सेफ रहनी चाहिए, इसलिए बॉडी का एक आधा पार्ट अगर वहां सैक्रिफाइस करने का काम पड़ा, फॉर एग्जाम्पल इन केसेस ऑफ नेक्रोसिस गैंग्रीन, that is the crooked strategy. The organism at the base level as a function of third function, that is syphilis, specially assigned for maintaining the integrity of the organism. Now, so body and the nature always try to maintain the integrity. Here, the integrity of body. बॉडी सेफ रहनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा कहीं अगर कॉम्प्रोमाइज करने का काम पड़ा तो वो बॉडी कर देगी. बट दिस हैपन्स ओनली इन सिफिलिटिक miasm. This integrity is maintained with a specially designed system called immune system, which has been mentioned earlier in the crook option. The immune system or immune mechanism is sacrificed, and hence it helps in destroying an unwanted part. The falling of a gangrenous toe in diabetes is an ideal example of how a body defends by destruction. So this is the best example that how body can save the life. This defense by destruction can be equated to our third miasm, that is the miasm of Hahnemann, syphilis. When a part of whole is shred off or broken, the whole organism will look crooked. आपने देखा होगा कि बहुत से कैंसरस पेशेंट आफ्टर सर्जरी, आफ्टर कैंसर, आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट कैंसरस पार्ट become crook. Yes, so the appearance will be distorted. The whole body of an organism or individual has a symmetry to maintain. There is a balance in physical and mental faculties. This balance or the equilibrium is in control of immunity. There is a social order of 100 trillion cells working harmoniously to maintain an equilibrium. Every cell shares or maintain the equilibrium, at the same time benefits from the equilibrium. As long as equilibrium or homeostasis is maintained, health prevails. When the homeostasis is disturbed, it results in disease. Yes. So we learn this in physiology part of this book, or the first part of first book of Dr. Vijayakar sir, how the homeostasis, the physiology, the equilibrium maintained automatically in our body, and when this equilibrium or physiology or this harmony become disturbed, and how the disease will start. Only temporary disturbances in physiology. There is physiological disease like psoriatic disease,
inflammatory disease, and there is severe disturbance in equilibrium or the homeostasis of body, the defense will change. That change of defense may be constructive, and that construction is psychosis. And when there is a massive disturbance in equilibrium, there may be the chances of death or totally destruction of life. So when the homeostasis is disturbed, it result in disease or even death. So what on these same grounds has Hahnemann expressed the definition of health and disease? Harmoniously balanced operation of vital force result in health, and disturbed balance of vital force result in disease. If the harmony is responsible for health, the disturbed harmony loses control over health. So in short, harmonious functioning keeps all the parts in control, and these parts maintain harmony and immunity. हार्मोनी मेंटेन होने के लिए, इम्यूनिटी मेंटेन रहने के लिए बॉडी के सभी पार्ट ने, सभी ऑर्गन्स ने, सभी सिस्टम ने, ऑल सेल्स ने बॉडी के वो हार्मोनी मेंटेन करनी चाहिए. दैट मीन्स उनका फंक्शन एंड एसेंशियल प्रॉपरली होना ही चाहिए, तो ही बॉडी वी कैन से हेल्दी. व्हेन अ पार्ट इज डिस्ट्रॉयड, the balance is lost and control is lost. This out of control organism goes in for further destruction and distortion. So the destruction and distortion is the expression of syphilis. The syphilitic miasm expresses itself as out of control. So कोई भी चीज जब out of control हो जाती है, कंट्रोल के बाहर हो जाती है, दैट मीन्स सिफिलिस स्टार्ट. फिर वहां पे एक तो डिस्ट्रक्शन होगा या फिर डिस्टॉर्शन होगा, एंड हेंस इट विल गिव राइज टू अगली लुक. जो भी डिस्टॉर्शन भी हुआ या फिर डिस्ट्रक्शन भी हुआ तो अगली लुक आना ही. So shape of body will change. So this is the physical how the syphilis gives rise to physical symptoms. So ugly look, distortion, destruction, etc. Now the mentals of syphilis. When we apply the above expression of syphilis to mind, यही expression mind level पे आप apply कीजिए, है ना. जिस तरह से अगर बॉडी लेवल पे, सेल लेवल पे, टिश्यू लेवल पे सिक्युलेटिक डिस्टॉर्शन, डिस्ट्रक्शन, अगलीनेस देगा, क्रुक एंड हुक देगा, उसी तरह से माइंड लेवल पे भी देगा. माइंड में अगर इमोशंस लो, विल, नेचर, इंटेलेक्ट लो, वहां पे अगर सिक्युलेस स्टार्ट हुआ तो इमोशंस बिकम आउट ऑफ कंट्रोल. So when the emotions become out of control, if the man is angry and after syphilis the anger become out of control, so distortion, destruction start. So destruction of security giving rise to manias, insanity. Yes, सिक्योरिटी के लिए अगर डिस्ट्रक्शन आ गया, और सिंपल अगर एंजाइटी है, इनसिक्योरिटी है अबाउट सिक्योरिटी, किसी भी चीज के लिए, है ना, कोई भी सिंपल से सिंपल बात होती है जिसके लिए हम इनसिक्योर हो जाते हैं, और जब ये इनसिक्योरिटी, एंजाइटी बिकम आउट ऑफ कंट्रोल, आफ्टरवर्ड द मैन बिकम इनसेन, है ना. फिर वहां पे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आएंगे, डिप्रेशन आएगा, आउट ऑफ कंट्रोल, पैनिक आएगा, फियर ओवर पावरिंग हो जाएगा. यस, सो डिस्टॉर्शन, perversion, these are the signs of syphilis at mental level.
Destruction or distortion of volatile mind gives rise to perversion. So all these lead to ugly behavior. सिपिलिटिक पर्सन्स का भी आप देखो बिहेवियर अगली बिहेवियर रहेगा. द एंगर बिकम आउट ऑफ कंट्रोल. हाउ द syphilitic person, syphilitic mind person become behavior. तो एक एग्जाम्पल, जब मैं शायद 11th या फिर 12th में था, तो एक न्यूज हमने टीवी पे देखी थी तब कि कोई लेडी अपने बच्चे को लेके बस में ट्रैवल कर रही थी. देखो सिपिलिटिक माइंड कैसे होते हैं. तो वो बच्चों को लेके वो लेडी बस में चढ़ी, और बस में चढ़ने के बाद बस में भीड़ थी, तो एक जगह वो जाके खड़ी हो गई. तो बाजू में एक सीट पे सरदार जी बैठे हुए थे. तो सरदार, ये इस लेडी ने उस सरदार जी को पूछा कि जगह मिलेगी क्या. उन्होंने कहा कि ठीक है बैठो. पता नहीं वो सरदार जी किस गुस्से में थे, किस उनके माइंड में कौन सा वार चालू था, क्या युद्ध शुरू था, कौन से थॉट में, थिंकिंग में थे. कुछ देर बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, बस चल रही थी, सब लोग एंजॉय कर रहे थे ट्रैवलिंग को. और थोड़ी देर बाद उस बच्चे ने सुसु कर दी, और वो सुसु उस पर्सन के आंख पे चली गई. तो वो पर्सन को इतना गुस्सा आया कि उसने डायरेक्ट वो बच्चे को मार डाला. दिस इज आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर. सिपिलिटिक, हिस्टेरिकल, आप जो भी यहां बोलेंगे, बट द मेन थिंग इज सिपिलिटी. वो पर्सन किस थॉट में था, उसके माइंड में क्या चल रहा था, वो शायद घर से झगड़ा करके आए, जो होगा होगा, लेकिन सिपिलिटिक पर्सन किस तरह से बिहेव करते हैं. यस, सो ये होते हैं सिपिलिटिक पर्सन. इन्हें खाली थोड़ा सा स्टिमुलेशन चाहिए वायलेंट होने के लिए. यस, सो जो भी चीज इनमें होगी एट द मेंटल लेवल, जैसे कि इंटेलेक्ट, इमोशंस, बिहेवियर, विल, जो भी रहेगा आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा. yes. मतलब परवर्जन और डिस्टॉर्शन यहाँ पे थॉट्स का इतना भयंकर होता है, इतना डेंजरस होता है. जैसे कि आप देखो कि एक आधा पर्सन जब वायलेंट होता है, तो फिर वो चार चार पांच पांच लोगों से भी कंट्रोल में नहीं आता. दिस इज आउट ऑफ कंट्रोल. दिस इज द अग्लीनेस ऑफ बिहेवियर. दिस इज द अग्लीनेस ऑफ इंटेलेक्ट, विल, नेचर. ये सब सिपिलिटिक एक्सप्रेशंस है. नाउ द एक्सप्रेशंस ऑफ syphilis. A person is not balanced and again out of control. This may lead to hasty speech. ये hasty speech कैसा रहेगा? hasty speech आपने देखा होगा, है ना. लेकिन जैसे कि कुछ छोटे चिल्ड्रेन्स होते हैं, टॉडलर होते हैं, जिनका hasty speech होता है, बट दैट इज सॉरी. बट जो सिपिलिटिक हास्टी स्पीच रहेगा, वो इतना हास्टी रहेगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा. इतना कभी कभी वो फास्ट बोलेगा कि क्या बोला आपके माइंड के ऊपर से चल जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा. सो दिस इज हास्टी स्पीच बट सिपिलिटी. द एक्शंस एंड जेस्चर्स आर नॉट स्मूथ, बैलेंस एंड कंट्रोल. This leads to jerkiness of speech and actions and overall awkwardness.
Awkward behavior, walk, talk is a sign of no smooth control over faculties of expression. जो भी है सब आउट ऑफ कंट्रोल. Awkward behavior. Awkward behavior का एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ. मेरा जो पहला क्लिनिक था, वहां पे वो जो आउटर का पार्ट था, मतलब डोर एंड फ्रंट में पूरा मैंने 10 बाय 10 का एक पूरा कांच लगाया था, और उसमें उसके बाजू में एक 4 बाय 8 का कांच का ही डोर रखा था. तो एक दिन शाम को एक पेशेंट आया, और वो पेशेंट ना ही नशे में था, ना बहुत ही, मतलब वो सिंपली आया, बट दैट पर्सन इज सिम्पलेटिक पर्सन. उसने आया और इतने जोर से वो डोर पुश किया कि वो डोर के 2 टुकड़े ही हो गए. मतलब उसने उसके वे से वो उसे पुश किया. हमारे लिए वो बहुत ही स्ट्रांग पुश था कि भाई उसने बहुत जोर से पुश किया, लेकिन दैट पर्सन इज सिम्पलेटिक. हिज माइंड इज सिम्पलेटिक, हिज बॉडी इज सिम्पलेटिक. उसने उसके हिसाब से वो सिंपली पुश किया, बट वो जर्क इतना बड़ा था कि डोर के 2 टुकड़े ही हो गए कांच के. तो ये बिहेवियर होता है, ये ऑकवर्डनेस होता है, सिम्पलेटिक ऑकवर्डनेस. यस. तो इस तरह से इनके एक्सप्रेशंस आपको दिखेंगे. नाउ विल कैन बी आउट ऑफ कंट्रोल. विल बी आउट ऑफ कंट्रोल, तो वो कैसे? Syphilitic will कैसा रहेगा? The strength of will leads us to decide whether a person is positive, courageous person, or a weak and timid person. Weak and timid person, it is soric and psychotic. The reaction of a person in a situation help us to decide upon whether he is courageous or coward. But what if a person's reaction to situation is not constant? This is exactly the case as syphilitic. The reaction to situation can be too much or out of proportion to the stimulus, or too less. The behavior is unpredictably too much or too little, or no reaction at all. There is no balance or control over the system, giving rise to haphazard, awkward, uncontrolled, and unpredictable activities. ये syphilitic will, out of control will, out of control or haphazard, awkward and unpredictable activities का एक अगेन मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. मैं जब बहुत छोटा था, शायद 5th या 6th में हूँगा, शायद 5th में ही था, तो हम गांव में पढ़ते थे. तो हमारे यहाँ कैनल है, और कैनल के बाजू में ही रेलवे लाइन जाती है. कैनल के बाजू से ही रेलवे लाइन जाती है. तो रेलवे लाइन का वहाँ पे बहुत बड़ा, मतलब एक ब्रिज है, क्योंकि नीचे से एक रिवर जाती है छोटी सी, तो उसके ऊपर से मतलब कैनल का भी ब्रिज है. पूरा कैनल वो लिफ्ट किया है ब्रिज पर से, और रेलवे लाइन भी है. तो हम बचपने में वो कैनल में नहाने जाते थे स्विमिंग के लिए. तो हम 10-15 फ्रेंड्स लोग नहाने गए, और उसी वक्त कुछ लड़कियां भी वहां पे नहाने के लिए आई. तो हमारी इसमें एक सिम्पलेटिक विल वाला एक बच्चा था,
और उसके माइंड में क्या आया पता नहीं, किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए उसने, अब जैसे बच्चों बच्चों की बातें वहां पे चालू हो गई कि वो लड़का शायद किसी लड़की को चाहता होगा और वो लड़की उसको उसके तरफ देखती भी नहीं थी, तो इसने उसने किसी ने उसको चिढ़ाया होगा, तो इतना करता है करता वो करता फिर भी एक वो लड़की भाव नहीं देती। फिर इसने क्या किया, देखो इसने फिर इसने पूछा होगा कि भाई मैं और क्या करूं, क्या कैसे होगा ये सब। तो वो लड़के ने बताया तू उस पे इम्प्रेशन झाड़ने के लिए और कुछ तो भी कर, उसको इम्प्रेस करने के लिए कुछ तो भी कर। तो ये गया पट्टा, वो रेलवे लाइन के ब्रिज पे चढ़ा और ऊपर से जंप कर दिया, कई के लिए तो वो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। और नीचे पूरा मड था, वो जाके उसमें फंस गया। अच्छा हुआ वो सॉफ्ट जैसे दलदल वाला ये रहता है ना उस टाइप का, वो पूरा चिखल था वहां पे, तो बच गया। लेकिन कितना डेंजर, विल देखो कितना सिफिलिटिक होता है, एक्टिविटीज कैसे सिफिलिटिक बन जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल। मतलब साइकोसिस भी है किसी को इम्प्रेस करने के लिए, तो वो देखो साइकोसिस कैसे सिफिलिटिक में कन्वर्ट हो गया, एंड सिफिलिटिक ने क्या क्या करवा लिया। तो इस तरह से विल होता है सिफिलिटिक लोगों का। ये इतने करेजियस बोल्ड पर्सन रहेंगे कि छोटी सी चीज के लिए इनके जो रिएक्शन रहेंगे आउट ऑफ कंट्रोल रहेंगे, या फिर परवर्टेड रिएक्शंस रहेंगे। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इस तरह से अनकंट्रोल्ड, ऑकवर्ड, हैप्पैजार्ड, अनप्रिडिक्टेबल इनका बिहेवियर, इनके एक्शंस रहेंगे। यस, नाउ द सिपिलिटिक इंटेलेक्ट। अब सिपिलिटिक इंटेलेक्ट एक गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। अगर गुड इंटेलेक्ट है तो इतना इंटेलेक्ट आउट ऑफ कंट्रोल इंटेलेक्ट, बट वो इंटेलेक्ट अच्छी चीज के लिए लगा रहा है, दैट इज द गुड सिपिलिस। जैसे हमारे सोल्जर्स होते हैं, इनका इंटेलेक्ट गुड अच्छी चीज के लिए लगता है, दैट इज गुड सिपिलिस। बट वही जो हम पूरा वर्ल्ड जिनसे परेशान है, उनका माइंड सिपिलिटिक माइंड, उनका इंटेलेक्ट किस चीज में यूज होता है, तो लोगों को कैसे डिस्टर्ब करना, लोगों को कैसे मारना, या फिर द वर्ल्ड की शांति कैसे भंग करना, दैट माइंड इज सिपिलिटिक माइंड एंड bad mind, bad syphilitic mind. Yes. So intellect, either destruction or perversion of intellect, out of control intellect are syphilitic. Under active mind or dull mind, dull intellect can lead to stupidity. On the other hand, the mind can be intelligent but cannot be used at right time in right place. That is misplaced, giving rise to indiscretion. Action and opinions are not in control, not in proportion. There are children who are stamped as mentally retarded. These same children are unable to learn the school subject well but intelligent enough to know a film song thoroughly. They will know the names of film stars, pops, etc. लेकिन स्कूल का पूछो तो कुछ भी नहीं आएगा। इनको क्रिकेटर के नाम, वो इंडियन रहो फॉरेनर्स रहो, सबके नाम सबका रिकॉर्ड ऐसा टिप ऑफ टंग होगा, लेकिन स्कूल का पूछो तो कुछ भी नहीं।
This is indiscretion, misplaced intellect. They will identify them very briskly and quickly, but will not know the name of President of India, nor will he be able to identify a geographical location of Niagara Falls or Taj Mahal. The intellect is not directly directed properly. Yes, the children may grow up increasing their vocabulary with obscene words. The left brain and the right brain do not cooperate. Any amount of correction falls on deep ears. Yes. कितना भी समझाओ कितना भी करेक्ट करो उनके समझ में नहीं आएगा. दिस इज द मिसप्लेस्ड इंटेलेक्ट. सो आज हमने किस टाइप के इमोशंस हो सकते, किस टाइप का विल हो सकता, किस टाइप का इंटेलेक्ट हो सकता, एक्सप्रेशंस कैसे सिपिलिटिक हो सकते, ये सब हमने सिपिलिटिक के एक्सप्रेशंस आज देखे. नाउ जैसे साइकोसिस में सर ने केस दिया था वैसे सिपिलिटिक की यहाँ एक केस दी है. केस भी बहुत अच्छी है तो हम इस केस को कंप्लीट करते हैं. A boy of 8 years had a bad habit. In school, he would go and pick up the skirt of young girls repeatedly. Very bad behavior. He was bashed up by girls, punished by teacher, reprimanded by parents, but to no avail. He would admit his mistake but could not mend his ways. मिस्टेक समझ में आ रही लेकिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा. He would do it all over again and again. This was not defiance nor disobedience. He just could not control himself and his brain refused to learn the right things. So automatic behavior. His mother complained that it seems it never needs food. He never needs food. If I am late from office, he will just go to sleep without even complaining. If I don't feed him at night, he will not get nourishment. I try to wake up, but he won't. I feed him with my own hands, and he will not refuse it. देखो नींद में भी मतलब उसे इस चीज का सेंस ही नहीं है कि पेट में खाना जा रहा है, फिर नो टेस्ट, नो सटाइटी, है ना, बस खाते जाएगा, पेट भर गया, पेट मतलब एब्डोमेन फुल हो गया, इसका भी पता नहीं चलेगा. So he will go on eating and eating and eating. There is nothing like satiety. This has been his nature since birth. He will eat and eat but never say enough. If the food is salt less or having excess salt, he will never complain. No taste. He will devour both with equal relish if his child was good at studies and scored well. देखो वन ब्रेन बहुत ही अच्छा है और एक ब्रेन कुछ भी जीरो. So in another case, a girl of 6 years would go and touch a hot iron despite being scolded badly. और ये बार बार करेगी. So he fell from a swing, go hurt, relieved 9 stitches in the forehead. Next, she went on to the same swing and played the same aerobics to show how she fell down. Now, that means no sense of right and wrong. Much to the horror of the parents, she, trying on third floor of a building, tried to walk on the parapet outside the window, which was
hardly 6 inches broad. When questioned why she was doing it, she coolly replied, I want to go to the next room and the door is too far. Totally misplaced. Indiscretion. This is a good shortcut. This is indiscretion, foolishness, but above all, improper use of intellect. Improper use of intellect. Yes. So, in all above cases, we find that the sense of right and wrong is abolished. The intellect does not know what is right for him and safe for him or what is wrong for or harmful for him. Such patients, if they are chilly, are syphilitic like anacardium. Yes. Imbalance state of mind. Even grown-up children who do not know where to spit, where not to, where to speak, where not to, and what to do and what not to do, may be syphilitic minds. मतलब बैलेंस ही नहीं है, अनबैलेंस माइंड, अनबैलेंस डिसीजन, अनबैलेंस रिकॉग्निशन, ऑल जहां कहां इम्बैलेंस है, दिस इज लाइक एनाकार्डिया. The body too does not realize what I am hungry, whether I am satisfied and full, whether there is excess salt or spice, whether there is less salt of and less spicy, etc. मतलब no sense of right and wrong. This is syphilitic. Now morals. How the morals become syphilitic. This abolished sense of right and wrong makes the anacardium go on eating and not hunger. This abolished sense makes him cruel and do immoral acts and many times makes him go in for drugs or become criminal without remorse. These very innate characteristics make him open lascivious, yes, lewd, and behavior obscenely in public. He can become shameless to such an extent that he removes his clothes and exhibits nudity like syphilitic parasites. ऐसे किस्से आप लोग हम लोग बहुत सुनते हैं, न्यूज़ पे सुनते हैं, है ना, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं कि ऐसे किस्से हैं, ऐसे लोग सोसाइटी में हैं जो रोड पे आते हैं, इनका माइंड सरक गया, थोड़ा सा भी इनके माइंड के अगेंस्ट में कुछ होता है तो ये पब्लिक के आएंगे, ओपनली कुछ भी करेंगे. बेस्ट एग्जांपल इज राखी सावंत. एंड कुछ दिन पहले एक किस्सा हुआ था, कोई बहू को घर में तकलीफ दिए तो बहू रोड पे आई और ऑब्सेंसली कुछ तभी करने लगी. दिस इज टोटली इम्बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, नो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. और ये वही लोग कर सकते हैं जिनमें सिफिलिस, syphilitic miasm. Yes. So as long as psychosis prevails, there is a fear of criticism, punishment, loss of prestige, which forces the sex exploiters to have control on lasciviousness or lewdness, which can be indirect and clandestine. But in syphilis, there is no control, no holds barred. Sex campaign is purely syphilitic. Yes. So सेक्स से रिलेटेड जितने भी घटनाएं होती है, जितने भी न्यूज सुनते हैं, दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल, प्योर सिफिलिटी. Now emotions, how the emotions become uncontrolled.
Uncontrolled emotions are syphilitic traits. Emotions are essentially defense mechanism of an individual. Purely defense mechanism. Yes. तो ये कैसे? Emotion, how the emotions are defense mechanism. तो सिंपल टिमिडिटी लीजिए. टिमिडिटी कैसा इंसान का बचाव करती है, इंसान को कैसे सेफ रखती है. दैट एक्ट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म. अगर कोई इंसान बेसिकली टिमिड है तो वो किसी भी चीज को हाथ लगाने से डरेगा, है ना. सपोज यहाँ पे आयन रखी है और आयन में करंट है, वो हीट हो गई और उसमें करंट आ गया, और कोई टिमिड बच्चा वहां पे आता है तो वो हाथ नहीं लगाएगा उस चीज को. हाथ नहीं लगाएगा मतलब वहां पे उसका डिफेंस हो गया. और वही एक आधा सिफिलिटिक बच्चा वहां पे आए तो डायरेक्टली उस आयन को हाथ लगाएगा और चिपक जाएगा, क्योंकि वो करेजियस था. अब देखो दो इमोशंस है, एक टिमिड है और दूसरा करेजियस है. टिमिड पर्सन ने डिफेंस करके वो सेफ हो गया, और करेजियस पर्सन डिफेंस नहीं कर पाया इसलिए चिपक गया. तो इस तरह से इमोशंस आर द डिफेंस मैकेनिज्म. सो पीपल हु वीक have timid traits so that they don't involve themselves in fights or harmful situations. Anxiety is the emotion highly developed in them to protect them, generally Sora. Yes. So coward and intelligent but interactive mind of psychotic individual develops fear and escapist attitude as their defense or defensive trait. So in syphilitic, the very defensive function, that is the third function, is defective. Add to it defective, that means out of control. Means the defense of emotions are out of control. कोई भी इमोशंस लो, कोई भी हो, फियर हो, टिमिडिटी हो, ग्रीफ हो, हैप्पीनेस हो, जॉय हो, सैडनेस हो, जब ये सब इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, that means defective, that means syphility. So in syphilis, the man is not in control of his emotions. समझ में ही नहीं आता, दुख समझ में नहीं आ रहा, हैप्पीनेस समझ में नहीं आ रहा. हम बहुत बार ये सुनते हैं या फिर फिल्मों में भी देखते हैं, एक आधी न्यूज सुन लिए फोन पे और हार्ट अटैक आ गया. दैट मीन्स इमोशंस आर आउट ऑफ कंट्रोल. पुराने फिल्मों में दिखाते थे कि किसी के सामने, किसी कैरेक्टर के सामने किसी की डेथ हो गई, किसी को गोली मार दी, तो ये उस शॉक को लेके उनके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे और बिकम मैड. सो दीज आर आउट ऑफ कंट्रोल. बैलेंस नहीं है राइट एंड रॉन्ग को समझने का, एनालाइज करने का. सो दिस इज सिफिलिटिक माइंड. So in syphilis, the man is in not control of his emotions, but emotions control him. It is like the driving a car whose wheels and steering have no connection. Yes. ये उस गाड़ी के तरह है ये पर्सन्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इनके इमोशन कंट्रोल में ही नहीं है. ये कुछ भी करेंगे आउट ऑफ कंट्रोल करेंगे. इनके इमोशंस कहीं, मतलब ये लोग ऐसे होते हैं ना कि किसी किसी को मतलब एम्बेरस कर देते हैं. कि फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं डेथ हो गई और ये आउट ऑफ कंट्रोल, जिनका इमोशन उनके कंट्रोल में नहीं है, और ये पर्सन वहां पे गया, सब लोग साइलेंट है, बैठे हैं, डेड बॉडी के आजू बाजू में बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, सब साइलेंट है ना. डेथ हो गई लेकिन वहां पे पीस मेंटेन है. और ये पर्सन गया, इसका इमोशन कंट्रोल में तो है ही नहीं, और ये पर्सन इमोशंस के कंट्रोल में नहीं है, और वो गया जो जोर जोर से रोना चालू कर दिया, पटक पटक के रोना शुरू कर दिया, छाती पीट पीट के. दिस इज आउट ऑफ कंट्रोल.
इनका लाफिंग भी होता है, स्माइलिंग भी होता है, तो आउट ऑफ कंट्रोल. दिस इज सिपिलिटी. The steering wheel is supposed to give a control on the direction in which the car travel, है ना. तो इनका माइंड एंड बॉडी ये कनेक्शन में ही नहीं है, कुछ भी कर देंगे, जैसे कि व्हील एंड स्टीयरिंग इज नॉट इन कनेक्शन. If one at the steering wheel cannot control the wheel of the car, the person obviously is helpless and has to go where the car takes him, and that too is unintelligent. तो इमेजिन करो कि कार और कार के व्हील एंड स्टीयरिंग का कनेक्शन ही नहीं है, तो आप कितना भी स्टीयरिंग को कंट्रोल में लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन व्हील कंट्रोल में नहीं आएंगे. व्हील तो आड़े टेढ़े किधर भी भागेंगे, है ना. यस. तो इसी तरह से इनका भी होता है, जिनके इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते, जो पर्सन्स मेंटली आउट ऑफ कंट्रोल होता है, behaviorally out of control होता है. So this will invariably lead to destruction and death. Yes. Now crime, the last part of these syphilitic mentals. Most of the criminals who kill murder, massacre with or without remorse are made up of syphilitic constitution. ये क्राइम भी उसी तरह से होते हैं, इनमें कुछ मर्सी नहीं होती है. ये ऐसे मर्डर करेंगे कि जैसे इनको कुछ लगता ही नहीं, इनको कुछ होता ही नहीं. नो इमोशन, इमोशनलेस, है ना. एक एग्जाम्पल शायद मैंने दिया था कि एक वेल नोन सर्जन के कुछ पैसों के लिए किसी ने डायरेक्ट शूट कर दिया, और अनलकीली उस सर्जन के पास उस नाइट में कुछ भी पैसे नहीं थे. कुछ घड़ी वॉच वगैरह थी, मोबाइल था, दे दिया, फिर भी उसने उसे शूट कर दिया. दिस इज क्रिमिनल माइंड. जिसने शूट किया उसका माइंड कैसा था? क्रिमिनल, आउट ऑफ कंट्रोल, सिफिलिटिक. यस. सो दिस इज सिफिलिटिक चैप्टर. नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश हियर. So we learn miasm in details. Sora we learn in detail, psychosis we learn in detail, and now today the syphilis we learn in detail. Yes. So I think you have understand the miasm properly. Yes. तो अब आगे हम देखेंगे कि why the miasms and how the miasms are good and bad. Yes. Bad miasms क्या है, गुड माइजम्स क्या है, देन माइजम्स मतलब अकॉर्डिंग टू माइजम एज क्या होता है, लाइक. तो ये सब चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं. सो थैंक यू वेरी मच. आप लोगों ने बहुत शांति से सुना. शायद आज अगर कोई निडल भी नीचे गिरा देता था तो उसका आवाज आता था, इतना साइलेंस आज था. तो थैंक यू. और अगर किसी को कुछ पूछना है तो हम 5 मिनट में फटाफट निपटा लेंगे. यस. यस, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो हम स्टॉप कर लेते हैं. ओके. सर कि शांति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है ना. इतना पीस भी अच्छा नहीं होगा. थैंक यू. साइकोसिस बहुत बहुत पीस हो गया तो सिफिलिटिक हो जाएगा. यस. यस मैम बोलिए. सर जैसे माइजम सोरा टू साइकोसिस या साइकोसिस टू सिफिलिस शिफ्ट होता है,
वैसे साइकोसिस एक्सेस टू लेस या फिर लेस टू एक्सेस शिफ्ट हो सकता है क्या? साइकोसिस लेस से साइकोसिस एक्सेस में जा सकता है, साइकोसिस एक्सेस से भी साइकोसिस लेस में जा सकता है। अच्छा, और दोनों माइजम एक साथ में प्रेजेंट रह सकते हैं क्या एक पर्सन में, साइकोसिस एक्सेस और लेस? ये भी हो सकता है। अगर अगर किसी पार्ट में एट्रोपी हो रही है, जैसे कि सपोज किडनी में एट्रोपी हो रही है या फिर कोई ऑर्गन में एट्रोपी हो रही है और उसे पहले से कोई न्यूरोफाइब्रोमा है या फिर कोई किसी पार्ट में सिस्ट है, ये भी हो सकता है। मतलब जो फाइब्रिन एक्सेस फाइब्रिन लेस भी हो सकता है, फाइब्रिन जैसे फाइब्रिन है वैसे ही इलास्टिन लेस भी और इलास्टिन एक्सेस भी हो सकता है। ओके सर, थैंक यू। और यही केस फिर आगे जाके सिफिलिटिक हो सकती है, क्योंकि इम्बैलेंस स्टेट ऑफ बॉडी हो रही है, इम्बैलेंस स्टेट ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी होता है, तो वो हिस्टेरिकल भी हो सकता है आगे जाके। ऐसे केसेस में आप हिस्टेरिकल रूब्रिक भी ले सकते हैं। यस। और कोई? कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है, इसका मतलब एक तो आप लोग बहुत ज्यादा समझ चुके हैं या फिर? सर लेक्चर से रिलेटेड नहीं है, दूसरे विचार होता है थोड़ा। हाँ विचार। फियर ऑफ लॉसिंग समवन और लव्ड वन, रुब्रिक ह्याला फक्त मला कम्प्लीट डायनेमिक मध्येच भेटलाय, तर दुसरं अजून त्याला आपण वेगळा रुब्रिक काय घेऊ शकतो? फियर ऑफ लूजिंग और फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ पॉवर्टी, डेल्युजन लॉसिंग, हा हा, डिल्युजन लूजिंग पण घेऊ शकता, लव्ड वन, लव्ड वन पण घेऊ शकता किंवा पण इम्पॉर्टंट वन लुझिंग घेऊ सर, शकता किंवा लुझिंग नाही प्रॉपर्टी मिळत घेऊ शकता। सर, Yes. लुझिंग नाही मिळत आहे, तर त्याला म्हणजे कारामध्ये पण नाही भेटलं मला। तर त्याकरता तुम्ही सिच्युएशन सांगा काय, हिस्ट्री सांगा काय। दॅट इज हिस्ट्री सर आहे की म्हणजे माझा ब्रदर आहे, त्याचे म्हणजे सिस्टरचा भाऊ आहे, तर त्याचे पॅरेंट्स नाही आहेत, म्हणजे वडील एक्सपायर आहे, तिला ओनली वन ब्रदर तुमच्या आहे। सिस्टरचा भाऊ म्हणजे? सॉरी, पेशंट आहे, तिचा भाऊ आहे, अच्छा। तिला फिअर आहे की तो त्याचं काय होऊ नये अबाउट हिज हेल्थ, म्हणजे 2-3 वेळा ऍक्सिडेंट झाले, मग तिला असं फिअर वाटतं की काहीतरी होईल लाईक दॅट असं, म्हणजे समथिंग विल तिला, हॅपन। हा तो तर घेतला, पण इट इज अ सायकोसिस होईल ना सर, म्हणजे हायर आहे, तिला ब्लिडिंग होते, नेझल ब्लिडिंग। डिल्युजन सायकोसिस नाही, डिल्युजन सिफिलिटिक मध्ये जाईल। नाही सर, हा आता फिअर ऑफ समथिंग हॅपन हॉरिबल, टेरिबल गोइंग टू हॅपन, ते सिफिलिटिक आहे। ओके सर, ओके ओके हा, ते सिफिलिटिक रुब्रिक आहे। ओके, चालेल, ठीक आहे सर, हा मी ते तर घेतलेलंच आहे, पण अनदर हायर साईड लॉसिंग, तिला फिअर असं वाटतं की तो त्याचं काहीतरी होईल, म्हणजे लूज करेन मी तिला असं। फिअर ऑफ मिसफॉर्च्यून घेऊ शकता, हा, फिअर ऑफ मिसफॉर्च्यून, येस सर, डिल्युजन मिसफॉर्च्यून घेऊ शकता। येस सर, इनकन्सोलेबल, हा, डिल्यूजन मिसफॉर्च्यून इनकन्सोलेबल, हा, इनकन्सोलेबल। थँक्यू डॉक्टर कलबुर्गी। येस सर, थँक्यू सर। या, थँक्यू। पेशंट एक सर रुब्रिकच पाहिजे होतं, कुठेही प्रेस केलं म्हणजे जिथे पेन होत आहे तिथे प्रेस केलं तर डकार येते, इरेक्शन येते, इट इज सिफिलिटिक आय थिंक। सिफिलिटिक नाही आहे ते, काय आहे? सायकोटिक। आणि रुब्रिक काय? रुब्रिक बघा तुम्ही, बहुतेक जनरॅलिटी मध्ये ये रुब्रिक मिळेल, गॅसेस पास प्रेशर ऑन,
अच्छा, म्हणजे पेन कुठेही असते बॉडीच्या कुठल्याही पार्टवर. सर डायरेक्ट पॅथॉलॉजिकल रिलेशन तर नाहीच आहे कशात. ढेकर येतात, ढेकर हा है ना. इरक्टेशन पास प्रेस ऑन असं आहे एक रुब्रिक, बघा तुम्ही. बरं. हे इरक्टेशन सायको आहे की गॅसेस आहे एक्झॅक्टली नाही माहिती मला, परंतु आहे रुब्रिक. सर असं अच्छा. तसंच आहे सेम एका रेमेडी मध्ये, पण आता एक्झॅक्ट रेमेडीचं नाव नाही क्लिक होत आहे. सेम सिम्पटम आहे. आहे. आय थिंक कलकिरिया अगेन काम, कलकिरिया काम, ब्रायोनिया आहे सर, ब्रायोनिया कार्बोवेज वगैरे. कलकिरिया काम आहे, कलकिरिया. Syphilitic म्हटलं सर, कारण की असा कुठलं हे नाही ना रिलेशन पॅथॉलॉजिकल की कुठलाही मसल्स परंतु पेन त्या रुब्रिकने ते रुब्रिक घेतल्यावर तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह नाही होणार आहे. का बरं? अजून सायकोटिक डिटेल, असल्यामुळे. अजून डिटेल घ्या. हा, ठीक आहे. ते पर्टिक्युलर झालंय, त्यांनी ते रुब्रिक टाकलंय, तुम्ही मेडिसिनही दिली तरी तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह नाही होणार. तुम्हाला अजून डिटेलमध्ये जावं लागेल. ते डिटेलमध्ये असं जावं लागेल की हा प्रॉब्लेम स्टार्ट कधीपासून झाला आणि का झाला, तेव्हा काय झालं होतं. अच्छा. कारण माइंड बेस्ड. हे रुब्रिक घेतलं तर हे पर्टिक्युलर झालं आणि ते टेम्पररी काही दिवसासाठी रिलीफ होईल आणि नंतर अजून ऍज इट इज स्टार्ट होईल. Right? ठीक. ओके, थँक्यू. ओके, सो बाय बाय, सी यू. कल हम फिल्म मिलेंगे. ओके सर, बाय बाय, थैंक यू. ओके, बाय बाय, टेक केयर. यस सर.